Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at JB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, I will tell you why there is slow decomposition of rice residue. It is a big problem that rice residue decomposition is very slow. It takes long time for decomposition. This is the reason that farmer used to burn this rice residue because decomposition is very slow. While in case of other crop, if we compare with maize or sugarcane or wheat, decomposition is not so slow, means decomposition is good and it takes not long time. So decomposition problem is with the rice residue, and rice is grown in India over a large area. So there is a huge quantity of residue, and this rice is grown in several cropping system sequence, and rice wheat cropping system is very common in India and in Indo-Gangetic plain, and rice is harvested in the month of October and November in North India. Then after the harvesting there is a sowing of wheat. So if there are residue in the field and it is not decomposed, then there is not timely sowing of wheat and wheat productivity is affected. So residue which are present in field must be decomposed quickly so that next sowing of wheat is not hampered. तो जो राइस वीट का रोटेशन है उसमें राइस हम अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट करते हैं और उसके बाद हम वीट की सोइंग करते हैं, लेकिन देयर इज अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रेजिड्यू एंड देयर इज अ वेरी स्लो डिकम्पोजिशन of this residue, and it takes more time, and it is observed that it takes more than 100 days, 150 days, even for 50% decomposition. तो ये इतना स्लो डिकम्पोजिशन है एंड रेजिड्यू रिमेन ऑन द सॉइल सरफेस एंड इट अफेक्ट द नेक्स्ट क्रॉप दैट इज वीट फील्ड प्रिपरेशन. और वीट है, वीट के बाद हम चिकपी भी ले सकते हैं या मस्टर्ड ले सकते हैं. रवि क्रॉप्स जो हैं, मीन्स रवि क्रॉप सोइंग इज अफेक्टेड, particularly field preparation, and this because of this slow decomposition there is immobilization of nitrogen, and it causes the nitrogen deficiency in succeeding crop. So this is the problem. If residue are kept into the field, then this is the problem that next crop suffer from nitrogen deficiency. Why there is so? That it is slow decomposition and immolation of nitrogen and nitrogen deficiency in succeeding crop. Actually, the decomposition of organic matter, whether it is a crop residue or FYM or dung or compost, any organic material is carried by microorganisms. So if there is a residue, it is decomposed by microbes. So we have to first understand what is the actual process of decomposition. So this is the crop residue, means this is the organic matter, and on this organic matter microbes act because this contain carbon. So they use the carbon as a food. So carbon is a food for microbes. So carbon is food for microbes. So microbes act on organic matter and there is cell synthesis. And similarly with the carbon, they require nitrogen for their protein synthesis. They require microbes for protein, for protoplasm, and similarly other nutrients also required for their metabolic activity. So this is the process, and the microbes actually secretes the enzyme. So they secretes the enzyme, and these enzymes break this organic residue, whatever the components are there, cellulose, hemicellulose, sugars, starch, protein, amino acids, simple protein, crude protein, lignin, etc. So decomposition of this microbes is mediated by the enzymes, and this enzyme act on the organic matter. If enzymes are available, then they break the organic matter. If enzymes are not available, then there is not decomposition, means breaking of compounds. And this contains cellulose, it contains hemicellulose, and it contains lignin. And this component, this lignin, cellulose, hemicellulose, takes more time for decomposition because these microbes lack the enzyme टू ब्रेक द लिग्निन सेलुलोज हेमोसेलुलोज. तो जो क्रॉप रेजिड्यू हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उसको माइक्रोब्स एक्ट करते हैं
उसको डिकम्पोज करते हैं, उसका कार्बन यूज करते हैं सेल सिंथेसिस के लिए, उसको फूड यूज करते हैं और उसको CO2 में कन्वर्ट करते हैं और दूसरे न्यूट्रिएंट को अपने बॉडी के सिंथेसिस के लिए लेते हैं। अब कार्बन किस फॉर्म में है प्लांट रेजिड्यू में? लिग्निन में है, सेलुलोज में है, हेमोसेलुलोज में है। तो तो ये बहुत टाइम लेता है डिकम्पोजिशन में, क्योंकि माइक्रोब्स में सेलुलेज एंजाइम कम होता है, बहुत कम होता है, उस कारण से डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता। तो इनका बहुत स्लो डिकम्पोजिशन होता है बिकॉज द माइक्रोब्स lack this enzyme. So slow decomposition of this lignin, cellulose and hemicellulose. While there is a fast decomposition if there is a sugar, simple sugars like glucose, fructose, simple proteins are there, then it is very easy decomposition. And if there is a nitrogen is present, because nitrogen is required by the microbes for their protein synthesis, then there is a fast decomposition. So residue which have simple sugars, simple proteins and high nitrogen content, they decompose fast. While if they have lignin, high lignin, cellulose, hemicellulose, then there is slow decomposition. And in case of rice residue, this is the problem, that nitrogen content is very less. And this lignin and cellulose content is very high. And beside this, silica content is very high in case of rice residue. So this is the problem, particularly of this silica is in rice. तो जो सिलिका, हाई सिलिका कंटेंट वो राइस में होता है और इस कारण से डिकम्पोजिशन बहुत स्लो हो जाता है। तो जो CN रेशियो है, जो राइस का CN रेशियो, वी कैन से द CN रेशियो ऑफ दिस राइस इज वेरी wide CN ratio. Even it is 100:1, it is 90:1, in some cases 110:1. So this is the very wide CN ratio, means nitrogen content is very low and carbon content is very high. So this is the reason, because of high CN ratio, wide CN ratio, high lignin content, more cellulose content, more silica content, decomposition is slow, means microbes lacks enzyme. Bacteria and fungus have very slow decomposition, and actinomycetes can decompose the lignin, and there are some fungi which can degrade the cellulose, but their presence is very less, enzymes are very less, that's why decomposition is very slow. अगर ऐसा रेजिड्यू हम डाल रहे हैं जिसमें सेलुलोज या लिग्निन कम हो, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे पल्स का रेजिड्यू है, मूंग बीन है या काउपी है या चिकपी है, तो वहाँ जो डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ माइक्रोब्स को नाइट्रोजन मिल जा रही है, प्रोटीन मिल जा रही है और सेलुलोज नहीं है। तो जिसमें सेलुलोज ज़्यादा होगा, लिग्निन ज़्यादा होगा, वहाँ डिकम्पोजिशन स्लो होगा। तो ये दिस इज द प्रॉब्लम विद द राइस रेजिड्यू, दैट माइक्रोब act slowly because they lack the enzyme to decompose the lignin and cellulose, and another problem is with the low nitrogen content. Another problem with this rice residue is that rice is harvested in the month of October, November, and in North India at this time temperature start to decline. तो जब हम राइस को काटते हैं अक्टूबर नवंबर में, उस समय टेम्परेचर कम होने लगता है, एंड October and November and December. So residue are in October and November. Rice harvesting is there and temperature is low. And because of this low temperature, microbial activity is poor. So microbial activity is poor, and because of this poor activity, डिकम्पोजिशन इज वेरी स्लो। तो देखिए जो डिकम्पोजिशन होता है किससे होता है? माइक्रोब से होता है, एंड मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर मीजोफिलिक मीन्स दे रिक्वायर द टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो माइक्रोब्स हैं जनरल सॉइल में कौन सा मीजोफिलिक है, तो उनकी जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी जो होती है 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड इज वेरी गुड टेम्परेचर, 35 degree centigrade, even 40 degree centigrade is also good temperature. But if temperature is 10 degree centigrade or 15 degree centigrade, then activity is very poor. तो जब एक्टिविटी पुअर होगी उनकी, तो वो डिकम्पोज करेंगे ही नहीं. सो दिस इज द रीजन. सो दिस टेम्परेचर फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो इन डिसाइडिंग द माइक्रो एक्टिविटी. जो वीट हार्वेस्ट होता है, वीट इज हार्वेस्टेड इन अप्रैल एंड मई, देन टेम्परेचर इज वेरी हाई, देन इट इज डिकम्पोज वेरी इजली. तो जो रबी क्रॉप्स की जो हार्वेस्टिंग होती है
वो समर सीजन में होती है, टेम्परेचर हाई होता है, वो जल्दी डिकम्पोज कर जाते हैं। एंड सेकेंड, रेनफॉल इज देयर इन जुलाई, सो डिकम्पोज वेरी फास्ट। अब यहाँ क्या है, अक्टूबर नवंबर टेम्परेचर इज लो एंड देयर इज नो रेन, तो यहाँ कोई रेंज तो होती नहीं है नॉर्थ इंडिया में इसमें अक्टूबर नवंबर में, तो प्री सोइंग इरीगेशन देते हैं तो वही मॉइस्चर अवेलेबल रहता है उस समय, तो ये डिकम्पोजिशन और स्लो हो जाता है। अगर रेनी सीजन होता है, इन केस ऑफ रेनी सीजन देयर इज हाई ह्यूमिडिटी, मोर मॉइस्चरेबिलिटी, देयर इज मोर माइक्रो एक्टिविटी। अब यहाँ क्या है, मॉइस्चर भी कांस्टेंट है इन रवि सीजन, moisture limitation is there, temperature is also low, so temperature factor and the moisture factor, moisture is constant, moisture is not so available as in case of rainy season, तो इतना moisture नहीं मिल पाता। जो भी हम दे रहे हैं प्री सोइंग इरीगेशन दे रहे हैं, फील्ड को तैयार करने के लिए दे रहे हैं, तो there is a limitation of temperature, temperature is continuously declining and moisture is limitation, that's why there is poor microbial activity. Another factor, wide CN ratio, high cellulose content, high lignin content and more silica content, that's why decomposition is very slow of this rice residue. So this is the problem, and there is wide CN ratio, CN ratio is wide, so carbon is high, so that's why microbes take the nitrogen for their protoplasm protein synthesis, and nitrogen is not available in crop residue एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द माइक्रोब्स। तो अब कार्बन तो है रेजिड्यू में, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है उतनी जितनी की माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट है। तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, दे डिराइव द नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। सो सॉइल, तो जो माइक्रोब्स क्या करते हैं, सॉइल दे यूज द सॉइल नाइट्रोजन फॉर देयर प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखिए, जैसे हम कार्बोनेसिस मटेरियल डालेंगे, कार्बन मटेरियल डालेंगे, तो कार्बन मिलते ही माइक्रोब्स की सेल सिंथेसिस होगी। अब उनको नाइट्रोजन चाहिए। इफ ऑर्गेनिक मैटर है सफिशिएंट और नाइट्रोजन, अगर रेजिड्यू में सफिशिएंट नाइट्रोजन है, जैसे पल्स का रेजिड्यू है, सब सफिशिएंट नाइट्रोजन है, देन दे डिराइव द नाइट्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। इफ देयर इज नॉट सफिशिएंट नाइट्रोजन, तो उनको तो जरूरत है माइक्रोब्स को, क्योंकि उनकी सेल बन चुकी है। सो दैट्स व्हाई दे यूज द नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट इन सॉइल सॉल्यूशन। सो दे यूज द नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल सॉल्यूशन। नाउ द प्लांट्स विच आर डिराइविंग the nitrogen, they suffer from the nitrogen deficiencies, and this process is known as immobilization, because microbes use the nutrient, particularly nitrogen, from the soil solution, and plants suffer from nutrient nitrogen, plants suffer from nitrogen deficiency. तो अगर हम ये राइस का रेजिड्यू को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, वी इनकॉर्पोरेट द राइस रेजिड्यू एंड इट हैज वाइड CN रेशियो, सो देयर इज चांसेस ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इन सक्सीडिंग क्रॉप, इन व्हीट क्रॉप। अगर राइस व्हीट सिस्टम है और हम रेजिड्यू को इनकॉर्पोरेट कर दे रहे हैं और डिकम्पोजिशन भी हो जा रहा है, तो चांस है देयर इज अ इमोलेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इन व्हीट। सो दीज आर द प्रॉब्लम with the rice residue decomposition, and why it takes long time. So high lignin, high cellulose, high silica content, wide CN ratio, low temperature and low moisture, and these affect the poor microbial activities. So this is the reason that rice residue takes more time for decomposition. अब बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए फार्मर क्या करते हैं, उसको इजीनेस के लिए दे यूज टू बर्न द रेजिड्यू, कि जल्दी से खेत खाली हो जाए ताकि उसको हम अगली क्रॉप की सोइंग कर सकें। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द राइस रेजिड्यू डिकम्पोजिशन। तो ये जितने भी राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम एरिया है, वहां ये प्रॉब्लम है राइस रेजिड्यू डिकम्पोजिशन की, दैट इट टेक्स मोर टाइम फॉर डिकम्पोजिशन। सो दीज आर द साइंटिफिक फैक्ट्स बिहाइंड द स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ राइस रेजिड्यू इन द फील्ड। थैंक यू वेरी मच।